हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 17 बीपीएससी के इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चूँकि एक सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे राइट्स क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है ना? ये जो थ्योरी है इससे रिलेटेड तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, ऊपर ऊपर ही देखिए बट देख लें, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं आपको बेसिकली यहाँ पर करंट अफेयर्स का मैं डिस्कशन करूँगा। और करंट अफेयर डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि जैसे मान लीजिए कि कंटेम्प्रेरी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि अभी ईवीएस में है ना, अभी ईवीएस और इंडिया का जो रिलेशन है, इस पर मुझे लगता है कि क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसके पर्टेनिंग में मैं आपसे बोलूँगा कि आप उस पर जो है इंडिया और यूएस का रिलेशन है, इंडिया यूएस का रिलेशन, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ, आप इस पर सोच लेंगे या फिर आप इस पर आंसर बना सकते हैं कि जैसे आपसे पूछा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रम्प वन एरा एंड द ट्रम्प टू एरा, ठीक है। जो ट्रम्प वन एरा था और ट्रम्प टू जो एरा अभी चल रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है? उनके जो एरा मतलब नहीं बोल सकते, जैसे कि आप इनको बोलिए कि ट्रम्प वन का जो पीरियड था और ट्रम्प टू जो अभी है ना, दीज आर द मतलब 2 डिफरेंट पीरियड्स एंड इसमें जो है इंडिया और यूएस के रिलेशन में काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं। उस पर आपको बताना पड़ेगा। हो सकता है आपसे ये भी कुछ पूछा जा सकता है कि अभी जो इंडिया और यूएस के बीच में जो चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है? या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डि अगर आपसे पूछे, आप कहीं बोल दें कि बीच में अगर आपने बोला कि वीज़ा का इशू है, H-1B वीज़ा, तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि 3 टाइप्स ऑफ वीज़ा हो, मतलब बहुत सारे ऐसे वीज़ा हैं, लेकिन उसमें मान लीजिए H-1B वीज़ा होता है, L-1 वीज़ा हो गया, O-1 वीज़ा हो गया। तो इसके बारे में आपसे पूछा सकता है कि H-1B वीज़ा क्या होता है, O-1 वीज़ा क्या होता है, L-1 वीज़ा क्या होता है ना? तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें आपको पूछा सकता है। जैसे मान लीजिए कि H-1B वीज़ा आपको पता है कि ऑलरेडी कि दैट इट इज़ गिवन टू द स्किल्ड वर्कर्स, है ना? जो कि हाई इंटेलेक्चुअल्स होता है उनके लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। तो इसका L-1B वीज़ा होता है, जो कि जैसे मान लीजिए L-1 वीज़ा क्या होता है, मतलब कि अगर कोई कंपनी से गूगल का कंपनी इंडिया में है और ये ट्रांसफ़र यहाँ से आपका ट्रांसफ़र यूएस में हो जाता है, तो ये काइंड ऑफ L-1B वीज़ा होता है, आपको दिया जाता है। और O-1B वीज़ा होता है कि अगर आप काफ़ी मतलब किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में काफ़ी आप धुरंधर हैं, ठीक है? यू आर वेरी आर्डेंट प्लेयर, तो उसके लिए आपको दिया जाता है, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, है ना? या फिर आर्टिस्ट हो गए, उनको मिलता है ये। तो और आपसे ये पूछा सकता है कि मान लीजिए कि आपसे बोलेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एक रिसर्चर हैं, आप अगर जाते हैं तो आपको कौन-सा वीज़ा मिलेगा? तो आपको जनरली अगर स्टडीज़ के पर्पज़ से जाते हैं तो आपको F1 वीज़ा दिया जाता है, ठीक है? तो एक आप टाइप्स ऑफ वीज़ा में आप उसको याद रखेंगे। उसके अलावा आपको जो चैलेंजेस हैं इंडिया यूएस रिलेशनशिप में, तो उसमें आप देखेंगे जैसे क्या-क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला आप एक ट्रेड डिसरप्शन है ना, ट्रेड रिलेशंस है, तो कहीं न कहीं टर्मोइल सिचुएशन में है। व्हाई इट इज़ इन द टर्मोइल सिचुएशन? बिकॉज़ इंडिया जो है द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इम्पोज्ड दैट हाई high import duties, right? So that is one of the issue. You can say that there is this disagreement on the that tariffs, you know, high tariffs are imposed. And apart from this, another thing is that Russia-Ukraine war is going on, and on that matter, that USA has India is having certain differences with the USA has certain difference with the India, and in addition to this, that technological cooperation that we can see that on some of the on technological sharing that USA is quite repulsive on it and not in that matter. And another thing is that it also that it has given the remark over the human rights violation in the German Kashmir, which is our internal issues. And another thing is that Canada, that one Sikh uh, Khalistani was killed, and the Canada's administration has shown willingness to have the independent investigations, and the USA has remarked that India should cooperate in that investigation. And since this is the bilateral issues, and so the other party interference is not welcome by India. So that is one of the thing. And can you tell me that what is the different phases of evolution of India and US relations? Yes. So there are 5 phases of India and US relations that is mentioned in the India's way by the S. Jaishankar. And the first phase is seen from the 1947 to 1952 and 1962, and that was the era of cautious engagement, where India was cautiously engaged with both the parties, uh, especially with the USA and Russia. And from the 1962 to 1971, we have the strategic convergence that inclined to USA. Specifically, if we talk about that, China was rising, and China has attacked on India. So in that circumstances, that USA was supporting India. But meanwhile, in 1971, that in 1971, USA supported Pakistan, and then what happened that India went with the agreement, the friendship agreement with the Russia, and that was not welcomed by the USA, and this has led to the a kind of turmoil in the mutual distrust. And another thing is that we have the NSC, that Smiling Buddha test, which is nuclear test, and that was also unwelcomed by the USA. And however, 1991, that we have the economic crisis, and we also have the we also have the that USSR broken, USSR fall down. So at that time, India has no other option, but it has to go for opening the liberalization pathway, and we know that the foreign capitals have started coming to India. So a little bit of
improvement in the trade relations as well as the relationship between India and USA has transformed. And fifth phase is the especially seen after India USA civil nuclear deal, especially 2005. सो दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, तो आपको इसको आंसर देना है। तो सबसे पहले आपसे 5 फेजेस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस, ट्रम्प 1 ट्रम्प 2 पॉलिसीज में क्या डिफरेंसेस है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि जो इंडिया यूएस के बीच रिलेशंस है उसमें क्या चैलेंजेस है अभी के समय में, वो आपसे पूछा सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपसे पूछा सकता है ना, तो काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक आंसर यू कैन गिव। एंड so that's all about the India US relationship, and thank you so much.